हेलो जी, आशा करती हूँ आप सब बढ़िया हैं। टुडे आई एम बैक विद येट अनदर म्यूचुअल फंड रिव्यू ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ड फंड ग्रोथ। इस वीडियो में हम देखेंगे इफ इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू एज इन्वेस्टर्स, एज बिगिनर्स टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी और टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फंड। और इसमें हम देखेंगे आईसीआईसीआई गिल्ड फंड, तो गिल्ड फंड की कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर गिल्ड फंड्स इन जनरल, वेयर डू दे इन्वेस्ट, व्हाट हैज़ बीन देयर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, और हमारे देश में ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं ये फंड्स। तो ये सारे सवाल हम इस वीडियो में लेंगे और फिर एंड में हम वी विल डू अ स्मॉल रिव्यू ऑफ द आईसीआईसीआई गिल्ड फंड। इसकी रिटर्न प्रोफाइल देखेंगे, इसके डिफरेंट एक्सपेंस रेशियो, शार्प रेशियो, ये सब हम बातें करेंगे टू सी इफ इट मेक्स सेंस फॉर यू टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर गिल्ड फंड और नॉट. So ICICI Prudential Gilt Fund, as the name suggests, belongs to the ICICI Prudential AMC, which is a part of ICICI Group. जी हाँ, हमारे देश में ICICI नंबर 2 spot hold करता है after HDFC when it comes to the Indian banking system. Or this all the ICICI group also has a huge presence across the entire financial chain, whether it be banking, asset management हो गया, mutual funds हो गए, private equity हो गया, broking हो गया, तो काफी सारे services provide करती है ये group. So this was all about the ICICI group in India. Now let's take a look at the ICICI Prudential Gilt Fund. So before analyzing the mutual fund, let us take a look at what gilt funds are. गिल्ट फंड होते क्या है, ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. सो गिल्ट फंड बिलोंग्स टू द डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी rather than the equity. So debt funds are fixed income assets. They are fixed income assets, and in general they give us low return when compared to the equity class. Also the risk profile is lower in this case. Why? Because they invest in different types of central government as well as state government bonds as well as fixed income इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये डिफरेंट जो इनकी होल्डिंग्स होती है ये काफ़ी सेफ है, इसीलिए ये जो हमारा डेट फंड है, ये गिल्ट फंड है, इट इज़ रिगार्डेड एज सेफर दैन द नॉर्मल डेट फंड्स दैट वी हैव. व्हाई? बिकॉज गिल्ट फंड्स इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज एंड अदर फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस. तो अगर हम ब्रॉडली इसको क्लासीफाई करें, सो दे आर ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1 इज द अल्ट्रा शॉर्ट डेट फंड, देन वी हैव द लिक्विड फंड्स एंड देन वी हैव द मनी मार्केट फंड्स. तो ये 3 तरह के इसके कैटेगरीज हैं जिसमें गिल्ट फंड इन्वॉल्व है, और जनरली ये इन्वेस्ट करती हैं in bonds, bills, certificates of deposit. So different इसकी जो holdings है काफी safe है, इसीलिए it is regarded as a safer option than when compared to even the debt funds, making it very lucrative for investors as well as people who are starting their journey in investment. So for beginners it is also regarded as a good investment choice. Also ये जो debt fund का return, gilt fund के जो returns हैं, that is around 8 to 9% per annum in the last 10 years, which means that it has given us a pretty good returns when given that it has lower risk profile. तो low risk होने के बावजूद इसकी return profile काफी अच्छी है. So now let's get back to the ICICI Prudential Gilt Fund का review. So ICICI Prudential Gilt Fund has given us decent returns in the range of mid 8% range in the last 10 years of its existence. अगर हम AUM देखें इस फंड का, तो वो है around 3,500 करोड़, which gives it sufficient liquidity, and expense ratio is also very decent at around 0.56% if you're going directly. अगर आप broker या बैंक के थ्रू जाते हैं तो expense ratio बढ़ के आपका 1.09% हो जाता है. तो जैसे मैंने हमेशा कहा है, be very careful and always try to invest through the direct route, क्योंकि आप देखो इसमें आपको 0.6% का डिफरेंस रिटर्न्स में यहीं पड़ जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू टेक द डायरेक्ट रूट. अब हम बात करते हैं इस फंड की होल्डिंग्स के बारे में. तो पोर्टफोलियो ऑफ द बॉन्ड इज मोस्टली कंप्राइज्ड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के फिक्स्ड इनकम ऑप्शन सिक्योरिटीज में, फिक्स सिक्योरिटीज एसेट्स में. जैसे इस पर्टिकुलर केस में राजस्थान गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है. तो इनकी मैच्योरिटीज इज ऑल्सो डिफरेंट एट डिफरेंट. Why? To take advantage of the interest rate cycle. The fund manager can easily move in and out of this different assets that they are holding in the particular overall portfolio to take advantage. अगर interest rate, क्योंकि interest rate से ये काफी susceptible होता है because it is directly investing into the government securities. तो इसीलिए fund manager ने जो very cleverly he has taken into the assets with different maturity, so that अगर हमारे interest rate में ऊपर नीचे होता है तो वो उसी हिसाब से fund की holdings adjust करे so that our returns are maximized. So ये हो गया हमारे पोर्टफोलियो के बारे में. अब हम देखते हैं अगेन, लेट्स return profile देखते हैं in a little bit of detail. So the ICICI Pru Gilt Fund has beaten the benchmark CRISIL Dynamic Gilt Fund in the last index in the last overall time period. So it has given us better returns when we compare it to the index. और अगर हम last year की returns देखें तो very good returns at around 9.24%. Why? Because our इन दिनों हमारा जो yield था treasury bonds पे वो काफी कम था, and it will have an inverse effect on the pricing. अगर treasury yields हमारे बढ़ते हैं तो pricing कम हो जाती है, और अगर हमारे ट्रेजरी कम होते हैं तो प्राइसिंग इंक्रीज हो जाती है. सो इट हैज अ डायरेक्ट
effect on the overall value of the holdings in this particular fund. तो क्योंकि पिछले साल हमारे बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी कम हुए, तो इस हिसाब से हमारी इसकी प्राइसिंग अच्छी थी और हमने अच्छे खासे 9.24% इसमें कमा लिया है. तो अगर हम देखें तो ऑल्सो ICICI Prudential not only has beaten the index but also the different peers it has in this category. अगर हम बात करें तो around 30 of such funds exist in this particular gilt category. और अगर हम दूसरे फंड से इसकी कंपेयर करें, जैसे SBI Magnum Gilt Fund is one of the best gilt fund today in India. एंड लेकिन आप ध्यान दें एक बात पर कि इनका जो ये रेट स्प्रेड्स होगा इन दिस कैटेगरी, उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा. यू कैन नॉट डिफरेंशिएट द funds basis the rate spread. Why? Because they are, all of them are mostly investing into the government securities, the state backed or central government backed जो securities हैं, जो bonds हैं, उसमें invest करती है. तो इस हिसाब से आप देखें तो ज्यादा holdings में या फिर इनके जो rate spread होते हैं उसमें आपको इस category में, overall category में there is not much to differentiate. So now let's take a look at the risk involved in these kind of funds. So the fund has given us better risk adjusted returns when compared to the average. And also the biggest risk of these types of funds are interest rate risk. अगर interest rate high होता है तो हमारे जो ये fund के returns है वो कम हो जाते हैं. So overall in the 3-year time period the fund has returned only 5%. Why? Because the RBI sharply raised the interest rates in the recent past. तो इसीलिए इस fund की भी जो returns है वो कम हो गई. And also they are very susceptible to the interest rate fluctuation. जैसे हमारा interest rate बढ़ता है हमारी return profile कम हो जाती है, और क्योंकि value of the holdings also decline. तो इस वजह से जो recent past में इसके returns थोड़े कम थे at around 5%. लेकिन अगर आप long term और short term देखें, short term debt funds are not much susceptible to interest rate as compared to the long term debt funds. So when you are investing, be very sure of the time period that you are looking at. क्योंकि अगर आपने 10 साल का time frame लिया हुआ है for a long term investor who's looking at 10 years, तो फिर ज़्यादा इसमें आपको आपका जो return profile है which is will be very much similar to the current yield at around 7.5%. So in closing, I would just like to say that the gilt funds are a good way to invest in your funds, especially for beginners who starting their investment journey. क्यों? क्योंकि ये safer options हैं, government backed securities है. अगर कुछ पंगा एक तो होना नहीं चाहिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट will print the money and return it to investors. So that is the security of investing in some government backed scheme. So because this fund invests in all the government, both state and central governments bond and other fixed income assets. So इस वजह से इस फंड की जो रिटर्न प्रोफाइल है वो काफ़ी सेफ हो जाती है, और रिस्क कम होने के बावजूद ये फंड हमें अच्छे खासे रिटर्न्स दे रही है at around 8 to 9%, which is so much better than the returns we get in a normal fixed deposit. So ये इसके फायदे होते हैं. So ICICI Mutual Fund is one of the best run gilt fund in this category because it has done well in overall execution. The interest rate अच्छे हो गए हैं, और also अब हम आगे जाके we are expecting a lower interest rate. तो उस हिसाब से अगर आप compare करें, they will give you better returns than they have given in the last 3 years. So that was all from my side. I hope you like my video. अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर ज़रूर आए so that I get the encouragement to do more such videos and more such reviews. So for subscribing, you can just click on the green globe. जो नीचे green globe flash हो रहा है आप उस पर click कर सकते हैं. It will directly take you to the subscribe page. So that was all from my side. I hope to see you again. Thanks and have a very nice day.